who are enjoying. वरना क्या होता है कि people sometimes they get bored and they start leaving the hall. As you are aware that there are minority commission only in yet to decide. Assam promised, they wrote to us that we have taken decision, but so far they have not announced. I was in Dehradun when I met Chief Minister of the new state of Uttarakhand, and he promised that I will announce. But so far, no announcement. But few days back, I read in the paper that they have given Jain community also the minority status, but so far minority commission has not come forward. So, those of you, I welcome you, Professor Abu Bakr, Chairman Delhi State Minority Commission, Shri Kamal Khan, Chairman Jharkhand Minority Commission, Shri Sayyid Ibrahim Qureshi Sahab, Madhya Pradesh Minority Commission, Janab M.A. Kadwani Sahab, Chairman Maharashtra Minority Commission. Since the MLA and election meeting has been fixed for tomorrow by their observer, so Mr. Hafiz Muhammad, Chairman, he showed his inability to join because of the last minute. Do not come forward for this meeting. So it will not look good because we are committed for a joint effort. We can help to any extent so that meeting should have all the chairpersons in future. So with these words, I think we should now start with the agenda. The proceedings, our secretary, Mrs. Das, you must have been reading these days, Jingo. She is the one now suffering from this, and she couldn't join because she had to be admitted to hospital on account of Dengue. It's a new disease now which is becoming a issue for election also. कभी प्याज होता है, कभी आप ये प्याज ने बेड़ा गर्क कर दिया। आप प्याज दिया, आप ये हो गया। ये प्याज आके start. And the first item is confirmation of the decision taken in the first meeting. It was circulated, so if you approve, so we can go to the next item. Number 2 is the action taken statement. Now, the office has taken action on all our recommendations. First was that all state minority commissions should have all members from all communities. Or second target, they should also be given same power. Now, this is a very important item. Now, in the today's discussion also, number of speakers stress on this point that more power should be given to the minority. Now, we have written to Ministry of Home, we have written to all chief ministers already, and reminders have also gone. Number 1, that every commission should have at least one member each from the 5 communities which have been declared as a national minority. Now, certain states are having Jain as member because every state has been authorized, so they can do it. But at least all the 5 which have been declared nationally, they should have all the 5 members. So number of states have done it, but number of states are still to do like this. The other, that they should follow the National Commission pattern, has not yet been adopted by all states. लेकिन सर इसमें आइटम नंबर 1 में जी सर, आइटम नंबर 1 पर मैं बोलना चाहता हूँ। हाँ जी हाँ जी। इनको 3.5 साल हो गए। We have been after it, वो और सोचे, CL को मिले, CBS को मिले, इसने लेटर दिखा, कितनी मीटिंगें हुई, लेकिन असेंबली में 5 इसलिए नहीं हो सकता था कि वहाँ पर लोग ऑपोजिशन के लोग बिजनेस होने ही नहीं देते।
अगर 40 आइटम है तो उसमें से 10-12 आइटम लोग फिर But executive order have been issued. हाँ, फिर उसके बाद में No, executive orders have been issued. जी Chief Minister, government orders have been issued. Have they हाँ, issued orders? they had issued the orders, लेकिन वो थ्रू नहीं हुआ असेंबली में। नहीं। ऑर्डर ऐसा नहीं है। See, there are two ways sir. एक तो ये असेंबली में उसको पास होना चाहिए या फिर गवर्नर के पास से उनको ऑर्डिनेंस निकालना। तभी एक्ट बने। असेंबली में जब रखा उन्होंने तो असेंबली में थ्रू नहीं हो सका इसलिए कि बिजनेस होता ही नहीं, झगड़े हो जाते थे। तो सीएम ने उसको जॉइंट सेलेक्ट कमेटी के सामने भेज दिया कि अगर वो लोग अप्रूव कर लेते हैं तो वील गो थ्रू इट अच्छे लगी जॉइंट सेलेक्ट कमेटी है तो अप्रूव। वहाँ भी अनफॉर्चुनेटली 2 साल में कुछ नहीं हुआ क्योंकि वहाँ कुछ शिवसेना के मेंबर्स थे वो स्ट्रांगली उसको अपोज करते थे। उनका ये कहना है कि कमीशन की ज़रूरत ही नहीं है एंड जैसे शिकार भी और उन्होंने एक बहाना ये निकाला कि हमको लेट अस गो एंड इंस्पेक्ट द फंक्शनिंग ऑफ अदर कमिटीज कमीशंस। तो यहाँ है कर्नाटका में 2-3 दिन यहाँ रहे, यहाँ से देख कर गए यहाँ का जैसे सीएम यहाँ के चेयरमैन बनाते कि बहुत अच्छा है, लेकिन वहाँ जाकर उन्होंने बताया कि नहीं दैट ओनली फॉर माइनॉरिटी मुस्लिम्स एंड देयरफॉर इट शुड नॉट बी। उसके बाद जब जम्मू कश्मीर जाना तो हमने कहा जम्मू कश्मीर तो है ही नहीं कभी, तो वहाँ जाकर क्या करेंगे? What they want to see that what is the thing treatment meted out to minorities particularly Sikh community। हमने कहा इससे हमारे कमीशन का क्या ताल्लुक है कि उसको। तो इस तरह से ये मैटर आज 3.5 साल से पेंडिंग है, नथिंग इज बीइंग डन। एक्ट नहीं आपका एक्ट में है नहीं ये स्पेशली पावर। नहीं बात इनकी बड़ी क्लियर है कि जब तक एक्ट असेंबली नहीं करेगी एक्ट लागू नहीं होगा। अनलैस एग्जेक्टिव ऑर्डर से वी कैन नॉट गेट द स्टेटस। Status is only through a passing of the. So we will remind again the. ऑर्डिनेंस ला सर ऑर्डिनेंस निकाल नहीं सकते कि उसको पास नहीं करना पड़ेगा। फिर असेंबली करेगी 6 महीने के लिए क्या फायदा? ये क्या है तो कंपलसरी होता है। ऑर्डिनेंस अगर हो जाता है तो फौरन हो जाएगा। I think I'll write to निकल जाए तो फिर उसके बाद समझो हमारे कमीशन में पीरियड खत्म होता है। ठीक है नहीं ठीक है भैया वी विल राइट डेट हमारी खत्म हो गई 25 फरवरी को उन्होंने इसको फर्दर एक्सटेंड किया फिर फर्दर ऑर्डर्स, लेकिन वो बाद में होते रहने के लिए लेजिस्लेटिव पावर एक बार दे दिया गया तो फिर वो हमेशा के लिए रहेगा। एक तो ड्राफ्ट हो गया सब कुछ हो गया है। चलो ठीक है, पर मैं ये कह रहा हूँ कि बहुत स्टेटों में अभी पैटर्न लागू नहीं है, बहुत स्टेटों नहीं आज के सब ये करेंगे गवर्नर नहीं जनरल साहब मिनट कोई पढ़ता नहीं है। इसके अलावा इसके साथ डीओ लेटर जाना पड़ेगा कि ये चीज़ें एक दफ़ा जनवरी में किया है, मार्च में किया, अभी कुछ हुआ नहीं है। राइट टू गवर्नर आल्सो गवर्नर एंड कॉपी टू आवर होम मिनिस्ट्री। मेरे बात कर जी I have just taken over and still I haven't got the whole theory of institution. But one thing that you have used the word pattern. Now pattern has many aspects. For example, yesterday I asked you whether you get your budget appropriated from the parliament and then you said that ultimately come to you. It goes to the welfare ministry or some ministry you said, and then it ultimately comes to you. You can spread it the way you want. But in Delhi the situation is the money never comes to us. It is with one department. It was GA first, the General Administration Department. Now they are transferred to the own department, I'm told. And for a very small thing, you have to go to them. They send it to the secretary. The secretary may oppose that note that I write, or he may support it. In either case, it goes to them, and finally it lies there. It never gets back unless you follow it. And following up is also very difficult. You cannot send people and follow it up. You will have to write and follow it up. So that is one aspect of the pattern. So you say the same pattern, then all these characteristics of the different states commissions will have to be taken into account. Another question of pattern, for example, is the status of the commission. You have recommended a certain status. The assembly has passed a certain status, but through supporting legislation, that the status given by the act is reduced. Great reductionism there.
For example, it says the members will not get car, only the chairman will get a car. While the status given is one in which you can get a car and you can have many other facilities. But then subordinate legislation says no, the members will get only car allowance. Therefore, through subordinate legislation, you have reduced the status of the members of the commission and so on. I mean, there are several other issues also. So I would suggest that the commission should, I don't know whether it has been done, that would be quite new to this whole situation, but the commission should find out these details of the pattern in the different states and come to a decision as to what exactly, what pattern you want, and write detailed letters or whatever you say, pass resolutions and send it to the state governments to get these uniform pattern all over the country. Take your time, you will write to the chief secretary and the Thank you very much. ये वैसे जैसे मैंने पहले कहा कि there are two issues. One is to get what we have, but since we ourselves are feeling that enough powers are not with us, because we have no investigation wing, we depend upon all reports from the Deputy Commissioner, from the Chief Secretary. So unless a minority commission investigates on their own, you cannot get true picture. After all, issues are increasing, number of issues are increasing. So we have already requested the ministry, because in our case, a parliament is to amend the act, because we are with the parliament. So we have requested the speaker, we met the minister, we have sent to Home Ministry that minority commission should also have investigation agency. Second and foremost, arising out of today's discussion and earlier also, that our recommendations are not binding. We are recommending. And most of the time the government don't reply. So we have sent a note to the Home Ministry, and when the Home Minister came in our meeting last time, you remember, we told him that either it should be mandatory, if not, every state government must reply to us the reason for not accepting our advice. If that becomes, that will be very helpful, because in every case they have to come out with their proper reply. जब reply देने में problem होगी उनको, तो फिर हमारे recommendation मानेंगे. So we are again recommending this, that our recommendation first of all mandatory, otherwise a reply should come from government why they are not accepting of it. And ये agency for investigation. सर अपने एक्ट में कमीशन तो समीक्षा जब किए तो 104 कमीशन की रिकमेंडेशंस को उन्होंने एक्सेप्ट किया, और जिनको एक्सेप्ट नहीं किया उनके बारे में उनका जस्टिफिकेशन आया है, जब इस वजह से नहीं कर रहे तो विधानसभा के पटल पर उन्हें रखना पड़ता है. तो जिन स्टेट्स में एक्ट है और बाई एक्ट जहाँ कमीशन इस्टेब्लिश्ड है, वहाँ तो हमको इंक्वायरी का उसमें है, पावर है कमीशन जारी करने का. हम करते हैं अपनी स्टेट में कमीशन जारी. नहीं, इंक्वायरी का तो हमें है. नहीं, इंक्वायरी में कमीशन जारी करने का उनको बुला के पूछते हैं हमारी रिकमेंडेशन ये गई है, आप समझे नहीं मैं क्या कर रहा हूँ जी. हमारे पास पावर है टू समन एनीबॉडी, टू समन फाइल, टू समन पीपल, वो है. लेकिन जब इन्वेस्टिगेशन हम करनी होती है, सपोज समथिंग हैपन इन यूपी, इन मध्य प्रदेश समवेयर, तो वी इमीडिएटली राइट टू डेप्यूटेशन, वी राइट टू द डीजी पुलिस, वी राइट. अगर हमारे पास इन्वेस्टिगेशन एजेंसी हो लाइक ह्यूमन राइट्स कमीशन, तो वो अपनी एजेंसी उसी पर हम जाके खुद जाकर रिपोर्ट ले आते हैं. ह्यूमन राइट्स कमीशन का यही एडवांटेज है, दे हैव डीजी पुलिस अंडर देम एंड द होल पैराफर्नेलिया. उसी वक्त दे सेंड एंड ए लॉ ऑफिसर, दे सेंड देयर ओन टीम. तो एक्ट में अमेंडमेंट करना पड़ेगा अपने अपने स्टेट के एक्ट में इन्वेस्टिगेशन एजेंसी. समझे नहीं, तो ये अमेंडमेंट हम मांग रहे हैं. जब तक ये अमेंडमेंट नहीं होगी, कमीशन प्रपोज करेगा ना गवर्नमेंट ने तो आज पास किया है कि ये वो करके नहीं, पहले स्टेट कमीशन भी तो प्रपोज करें अपनी स्टेट्स को कि हम ये चाहते हैं इसमें अमेंडमेंट. वही हम कह रहे हैं कि स्टेट मिनॉरिटी कमीशन ने अपनी गवर्नमेंट को आपने रिकमेंड करना कि ये पावर हमें होनी चाहिए. हम भी अपनी तरफ से सब स्टेट को लिखेंगे कि ये पावर देनी चाहिए. वही आइटम कर रहे हैं, इसी आइटम पे करें. दोनों में कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं साथ हो सकता है, हम लोग कर लेंगे और सर्विस से भी होगा. और दूसरा है जी दैट
ये था हमारी मीटिंग में कि वी शुड अडॉप्ट ए प्रोसेस ऑफ डायलॉग। उसके लिए नेशनल लेवल पे जरूरत आपको महसूस हुई हमारे स्टेट में, तो ऐसा नहीं स्टेटों में थी। नेशनल लेवल पे हमारी मीटिंग हुई थी 4 मार्च। तो उसके बाद हमने जो मीटिंग की है फॉर योर इंफॉर्मेशन ताकि आपके नोटिस में रहे, 7 मार्च को हमने मीटिंग ली जिसमें तमाम कश्मीरी माइग्रेंट्स के लीडर बुलाए। 25 मार्च को हमने जितने उर्दू डिपार्टमेंट्स डील करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में उन सब की मीटिंग ली। उसके बाद 17 और 19 फॉर 4 days द कमीशन वेंट टू अजमेर शरीफ एंड हैड मीटिंग विद ऑल रिलीजियस लीडर्स देयर। 22 अप्रैल को ये कमीशन देवबंद गया बिकॉज दैट इज वन ऑफ द मेजर इंस्टीट्यूशन, और वहाँ ने सारा दिन कमीशन हैड लॉन्ग डिस्कशन देयर। उसके बाद 1 मई को जितने उर्दू अखबार के डेलीज हैं उनको कमीशन ने मीटिंग ली। 5 मई को हमने विश्व हिंदू परिषद से मीटिंग ली। 3 जून को हमने मदरसा बोर्ड जितने इंडिया के हैं उनकी मीटिंग की। 15-16 जुलाई को हम लखनऊ गए और मौलाना नदवी साहब जो चेयरमैन हैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के, उनसे मीटिंग ली और वहाँ उनके जितने तलबे सादिक और जो दूसरे उनके ऑफिस में रहे उनसे मीटिंग ली। 17 जुलाई को मिली गजट एडिटर से करी। फिर 23 को हमने ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस मुशर्रत सैयद शहाबुद्दीन की क़यादत में उनके 10 लोग आए, उनसे मीटिंग ली। 25 अगस्त को हमने ऑल इंडिया मिली काउंसिल जो उनसे मीटिंग ली। 5 सितंबर को कश्मीरी पंडित से। 16 सितंबर को हमने पहली मीटिंग करी जहाँ के तमाम मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन के रिप्रेजेंटेटिव आए और ये बड़ी कामयाब मीटिंग हुई। जितनी ऑर्गेनाइजेशन बड़ी हैं उन्होंने 2-2 भेजे और जॉइंट मीटिंग करी की कश्मीरी पंडित से। 24 सितंबर को मिस्टर मूसा रजा जो कि कन्वीनर थापे के कश्मीर जाने वाले, उनकी फिर मीटिंग हमारे दफ्तर में हुई और जिसमें रिप्रेजेंटेटिव आए। 7 अक्टूबर को फिर दोबारा ये कश्मीर के बारे में मुस्लिम और कश्मीरी पंडित की हम मीटिंग कर। और जैसे मैंने आपको बताया कि कल सुबह ये कमेटी जा रही है मिस्टर मूसा रजा IAS फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी, मोहम्मद शफी मूनिस जमात इस्लामी हिंद, डॉक्टर S.Q.R.Naseer ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड, मौलाना महमूद मदनी जनरल सेक्रेटरी जमात उलमा हिंद, नवैद हमीद मूवमेंट ऑफ एम्पावरमेंट ऑफ मुस्लिम इंडियन, जफर इस्लाम खान एडिटर मिली गजट, डॉक्टर उस्मानी साहब हमारे नायब सदर और शेरवानी साहब। ये मिनारिटी कमीशन, इसका कमेटी का नाम ही ये है, मिनारिटी कमीशन कमेटी फॉर सेफ रिटर्न ऑफ कश्मीरी माइग्रेंट। ये कल सुबह जा रही है कमेटी और ये 4 दिन रहेगी। और सबसे अच्छी बात ये हुई है कि जब हमने अनाउंसमेंट की तो हुर्रियत वाज द फर्स्ट पार्टी जिसने इसको वेलकम किया। उनके चेयरमैन का टेलीफोन आया कि हम वेलकम करते हैं, आप आइए और हम मीटिंग करवाएंगे। और चीफ मिनिस्टर ने वेलकम किया। एजुकेशन अदारों से सेपरेट मीटिंग रख दी गई है। वाइस चांसलर इज होल्डिंग ए मीटिंग। तो व्हाट वी आर ट्राइंग टू क्रिएट ए गुडविल एटमोसफियर। ना हमारे पास कोई ताकत है कि कोई हम उनको बसा सकते हैं, ना ही कश्मीरी पंडित तैयार बैठे हम ले जाएंगे, लेकिन हम कहते हैं कश्मीर से आवाज़ उठे कि भाइयों वापस आओ और हम आपके साथ। तो उसके लिए हमारी कमेटी इज टू वर्क विद ऑल ऑर्गेनाइजेशन सो दैट उसमें जो उसका असर इंडिया में न पड़े। क्योंकि आप जब जाते हैं लोग यही कहते हैं कि एक मिनॉरिटी वहाँ बैठी है उसके लिए क्या करते हो, आप बाकी मिनॉरिटी के लिए सारा दिन बोलते हो। तो इंशाल्लाह अगर ये कामयाब होती है तो ये बहुत बड़ा मिनॉरिटी कम्युनिटी का और मिनॉरिटी कमीशन का ये एक इनिशिएटिव होगा। तो ये जाएंगे और क्योंकि 25 को रोज़े शुरू हैं तो ये उस दिन वापस आएंगे ताकि उससे पहले ही हम ये कार्रवाई करके इसकी जब कोई रिपोर्ट होगी मैं आप सबको उसकी इंटीमेट। सर इसमें मेरा एक सजेशन, माइनॉरिटीज का जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, जो मेजर माइनॉरिटी एजुकेशन, उनके साथ कोई मीटिंग भी उनके साथ में होना चाहिए। जिस तरह
ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जो जजमेंट्स आए हैं उनकी लाइट में हम माइनॉरिटी स्टूडेंट को क्या करना चाहिए। जिस तरह भी एक जजमेंट में आया है कि हर स्टेट में जो रिटायर्ड हाईकोर्ट जस्टिस है उसकी चेयरमैनशिप में कमेटी बनेगा और वो कमेटी वहाँ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस की गाइडलाइन बनाएगा, एडमिशंस की और दीगर जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉल्व करेगा। तो एक इस तरह की मीटिंग्स भी आप रख रहे हैं। शेरवानी साहब को इस मामले में काफ़ी वो है। आपकी इतला के लिए ऑल क्रिश्चियन इंस्टीट्यूशन एजुकेशनल की 2 मीटिंग दिल्ली में हो चुकी और बड़ी काम ऑल माइनॉरिटीज की मैं आपको बताता हूँ ना, मदरसा बोर्ड जितने हैं उनकी हो चुकी। तीसरा, हमने ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जितने डिपार्टमेंट हैं जो ये मिनार्टी रद्द करते हैं उनकी मीटिंग की। अभी बैठे हैं दोनों हमारे ऑनरेबल कुलीग कि ऑलरेडी जहाँ जाते हैं हम मिनार्टी इंस्टीट्यूशन की अलग मीटिंग करते हैं और शेरवानी साहब का तो सब्जेक्ट ही यही है। इसमें नेशनल कमीशन में बुलाने एक मीटिंग, हर स्टेट से कमीशन से एक लिस्ट मंगा लें जो प्रोमिनेंट माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस हैं। जैसे अभी रहमान साहब वहाँ बता रहे थे उससे अपने उसमें इस तरह का एक प्रॉब्लम आ रहा है सामने। सर इसमें आज मुझे ये वाकई बहुत अहम सजेशन है और मैं भी ये समझता हूँ कि एजुकेशन particularly of the Muslim minority जो कि educationally 6, 7, 8 कहीं कहीं 10 और 20 times behind the rest of the nation है। लेकिन इसमें ज़रा सा हमें इस बात का भी ख्याल रखना है कि सिर्फ कर्नाटक में 4000 तो उर्दू मीडियम स्कूल हैं। इसके अलावा 4000 उर्दू मीडियम स्कूल हैं जिसमें 20,000 से ज़्यादा उर्दू मीडियम के टीचर हैं। इसके अलावा कन्नड़ मीडियम स्कूल हैं, फिर और हैं इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं, कॉलेजेस हैं। तो मेरे ख्याल से कोई 5-6 हज़ार इंस्टीट्यूशन तो सिर्फ कर्नाटक में। फिर इसी तरीके से यूपी में, बिहार में, मध्य प्रदेश में, इन द होल ऑफ इंडिया द नंबर ऑफ मुस्लिम एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन विल बी मोर देन 100,000। Now you can't call a meeting of 100,000 institutions. I think the spade work in this regard should be done by the state minorities commission, and each state minorities commission should organize a and think उसमें वो भी select out कर सकते हैं, हाई स्कूल्स की बुलाएं या इंटर कॉलेजेस की बुलाएं या इंस्टीट्यूशन आप प्राइमरी स्कूल को और डिग्री कॉलेजेस को बुला के एक साल बिठा लें, उनकी प्रॉब्लम्स भी एक नहीं होंगी। व्हाट विल दे डिस्कस, इट विल ओनली बी अ वेस्ट ऑफ टाइम फॉर बोथ। तो आप एक मीटिंग करें, हाई स्कूल्स की एक मीटिंग करें, प्राइमरी स्कूल्स की एक मीटिंग करें। आप जो माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन ऑफ हायर एजुकेशन है उनकी अपनी अपनी स्टेट में करें, हमें उसकी रिपोर्ट्स भेजें, हम उसमें जो कुछ कर सकते हैं। देन वी कैन इवन होल्ड ए लार्जर एंड ए सॉर्ट ऑफ एन ऑल इंडिया। मैंने दिल्ली के बारे में दिल्ली के चेयरमैन से सजेस्ट किया था। As soon as I heard that he had become the chairman of the Delhi Minorities Commission, I at once phoned to congratulate him, and in the same breath, I suggested to him कि भाई खुदा के लिए दिल्ली में जो उर्दू मीडियम और अदर मुस्लिम इंस्टीट्यूशन हैं, स्कूल हैं, उनकी जल्दी से जल्दी उनके बारे में कुछ फैक्ट जमा कीजिए एंड लेट अस स्टार्ट डूइंग समथिंग। इसी तरीके से वेस्ट बंगाल में हो सकता है, महाराष्ट्र में हो सकता है, और स्टेट्स में हो सकता है, देन ऑल इंडिया बेसिस पर भी हो सकता है। झारखंड में, रांची में, जमशेदपुर में देयर आर ए नंबर ऑफ मुस्लिम इंस्टीट्यूशन बड़े अच्छे हैं, उन सब के बारे में मालूम हो तो फिर वी कैन गो अहेड। मैं आपके इंस्टीट्यूशंस का एक वहाँ मीटिंग लिया। इसके अलावा अदर माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस का भी जो हायर एजुकेशन फील्ड में है, मैं आपकी तवज्जो इसलिए दिलाना चाह रहा हूँ कि अभी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं जिसकी लाइट में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को डिसीजन लेना है। फॉर एग्जांपल ये मेडिकल एजुकेशन है, टेक्निकल एजुकेशन है, जिसमें उन जजमेंट्स की लाइट में उन डिपार्टमेंट से ऑर्डर्स इशू होना है। इसलिए आपके लेवल पर मीटिंग बुलाने के लिए मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जो हायर एजुकेशन फील्ड में जैसे अलमीन है, हर स्टेट में 2-4 लोग हैं, हमारे यहाँ 2 हैं, गुरु तेग बहादुर एजुकेशन सोसाइटी, और एक वो है हमारा सेफिया कॉलेज, सेफिया एजुकेशन सोसाइटी है, आई के इस्लामी अकेडमी है, 4-4, 5-5 मुश्किल से। तो इनकी प्रॉब्लम्स के लिए आप वहाँ बुलाएं नेशनल लेवल पे, स्पेशली मेडिकल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन, वोकेशनल एजुकेशन, इन 3 के लिए जो हमारा रिजर्वेशन आया है सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में,
कि 50% रिजर्वेशन जो ग्रांटेड इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें हम कर सकते हैं और 100% रिजर्वेशन हमारा उसमें होगा जिनमें नॉन ग्रांटेड है। तो उसके लिए जो डायरेक्शंस होना है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेवल पे होना है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि स्टेट लेवल पे तो हम कर लेंगे। On that issue, yes. 4 or 5 meetings हमने मिनिस्टरों के साथ मीटिंग ली एजुकेशन डिपार्टमेंट में और प्रिंसिपल स्कूल्स के कॉलेजेस वगैरह से एंड वी अराइव्ड एट अ कंक्लूजन तो 50% तो एडेड स्कूल्स और अनएडेड स्कूल्स का या एडेड कॉलेज एंड अनएडेड कॉलेज का सवाल है। तो एडेड 50% जो तो उनको लिबर्टी है कि दे दे रहे हो। उसके बाद में ही से दैट poor people, poor students should also get an opportunity. So 10% should be given to the weaker section of the society, में backward OBC के लोगों में होता है। 20% would be for management. अगर management किसी को promote करना है स्कूल है, क्योंकि management में वहाँ पर ये हो गया तो उन्होंने लाखों रुपए फीस देना शुरू कर दी इसमें donation. It's not they capitation fee is not allowed. लेकिन development charges के तौर पर आप ले सकते हैं जितना चाहे। In other words वो ये इस तरह की चोरी नहीं दूसरी चोरी कर सकते हैं आप उसको अलग। तो वी हैव अ राइट एट अ कंक्लूजन कि गवर्नमेंट के साथ में बैठकर तमाम मिनिस्टर साथ में तमाम स्कूल शुड अडॉप्ट दिस फॉर्मूला। 50% तो आपका जो मैनेजमेंट का स्टेटस है वो है, उसके बाद में 20% मैनेजमेंट ले ले, 20% वीकर 10% एकदम जो वीकर सेक्शन को ओबीसी को और 20% उसमें और बहुत ही गरीब को मिल गया। तो इस हद एग्री एंड बॉम्बे में या महाराष्ट्र में इट इज बीइंग फॉलोड। लेकिन ऐसा है कि इसको ऑल इंडिया लेवल पर अगर करना है आपको तो आप कर सकते हैं। वी हैव ऑलरेडी डन इट। इन फैक्ट गवर्नमेंट हैज स्ट्रिक्टली टेकन ओवर क्योंकि तो अदरवाइज वी टेक एक्शन अगेंस्ट दोस पीपल इन डिफरेंट फॉर्म। ये नहीं कर सकते कि फोर्स करें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें जिनको उनको गवर्नमेंट को बताना पड़ता है। तो इट वाज वी हैड नियरली 4 or 5 मीटिंग ऑन दिस एंड वी हैव the point that I was please आप ऑन तो कीजिए ना उसको। रिटायर्ड जस्टिस की जो चेयरमैन कमेटी फॉर्म ना किसी भी स्टेट में नहीं की, एडमिशन रूल्स वगैरह जो फ्रेम करेगा माइनर Which item of the agenda we are discussing? The point that I wanted to make, Mr. Chairman, मेरी सारी कि ये बात दूसरी कुरैशी साहब ने पॉइंट आउट किया था। कुरैशी साहब ने भी पॉइंटों में ले लिया कि एजुकेशन के बारे में कुछ किया जाए। अदरवाइज वी हैव क्लियर द फर्स्ट 2 आइटम। नो हम नेक्स्ट आइटम पे आ रहे थे तो ये बीच में ही शुरू हो गई कि एजुकेशन के लिए। what Sharmani sir said is quite right. We must make a distinction between the school level where the numbers are unmanageable and their problems are also different. The school level problems are different. For example, one simple problem is you call a school a Urdu medium school and then post non-Urdu speaking people as teachers. Well, that's simple. However, in Delhi the situation has improved because of the efforts of C.R.Naseer. So that must be separated from the larger problem that Qureshi sir is talking about, the macro policy about higher institutions of education. That is something that comes under the mandate of the National Minority Commission, and I think you should take it up. ठीक है, आपकी जो सजेशन है शिवानी साहब इस सब्जेक्ट को देखेंगे, जैसे हुआ फिर आपकी सलाह देखेंगे। ऑलरेडी मिस्टर जस्टिन साहब ने ये मीटिंग ली है 2-3 डिफरेंट लेवल पे, तो जैसे आपका सजेशन है ये इसमें करते हैं। नो आइटम नंबर 3, ये जज साहब ऐसा है कि एज एटमोसफियर देश में चल रहा है उसमें देर इज ए प्रपोजल कि ऐसा कोई गवर्नमेंट एक्ट बनाए। वैसे तो लॉ इतनी इंडिया में हैं एग्जिस्टिंग कि लॉ की जो कमी नहीं है, ऑन एवरीथिंग देयर बड़ा स्ट्रिक्ट लॉ बने हैं, लेकिन ये प्रपोजल हमारे सामने ये आई कि ये जो हेट कैंपेन इसके लिए अमेरिका ने भी कुछ स्पेशल अभी ये सितंबर 11 के बाद उन्होंने एक बनाया है हेट कैंपेन पे। वाई नॉट ए स्पेशल लॉ शुड बी इन इंडिया टू चेक हेट, एंटी हेट कैंपेन ना हो कुछ और, इसलिए आप अपनी एडवाइस दें। Mr. Chairman,
As you know, we have so many laws which can tackle these things very easily. Even the quota is there. Whether it is applicable to not, I can't say. But the thing is this, that the way the propaganda is going on against minorities, I don't say Muslims, as you have told me, I will stick to minorities henceforth. Against the minorities or the largest minority. And there is no check by the central government upon that. There are particular leaders who are vomiting venom against the minority communities. So we have already ample power under the Criminal Procedure Code, Indian Penal Code and other acts in force at present, which we can very much apply against them. Well, you take the opinion of the House, if they are of the opinion that some special act to be enacted to stop this hate campaign, I have nothing to say against that. But there are already plenty of laws under which the central government can take action. Even ask the state government to take action. You see, only imposition of the president rule is not the answer. There is, in the constitution, there are articles, there are provisions where the central government can direct the state government to take action against against any law and order problem. So these things are to be discussed. You see, this is my viewpoint. Okay. Minorities should be controlled. Like that NCM. लिख के भी उन्होंने दिया था और मेहरबानी करो उनका देख तो लिए उनके सजेशन से ये No, यही कहा उन्होंने कहा there should be a special act in India. No. अमेरिका सजेशन को आगे न बढ़ा Just a minute. Mr. Chairman. दुकान सुनो हो जाएगी. Mr. Chairman, well, if you have given any suggestion, I don't know what are those suggestions. But still, it is better to look into it, to consider it, to place before the Commission, before the National Commission should consider it. And if they think proper, well and good, they can move the government. But in my humble opinion, I don't think any special law is necessary to curb these things, as you see. Had one thing, with due respect to the majority community members, with due respect, I am one of them. I am also an Indian. The way a particular section of the communal forces are uttering venom against a particular community, if any member of the largest minority community says that 25% of them, he will be put behind the bar. And he will be prosecuted like anything. This is what the position stands, and this is the feeling I am expressing here so far West Bengal is concerned. May I, with your permission, take this away from making of laws? This hate matter is of very great concern, because we are reaching a stage now when one community starts hating the other community reciprocates, and it goes on, and has been going on too long. Of recent times, and especially when elections are close, these matters come to the forefront in a very big way. And I think if we today, as meetings of all states and the Central Minority Commission, take it upon ourselves to make it a very clear message to the whole country that this is a matter of very great concern. And this is a matter of concern not because we are of minorities, it's a matter of concern because we are Indians. A few days ago, one of the national dailies had an editorial which talked about one country sending people to the moon, and the other country thinking of sending only people to a particular place. Now, we need to take this up with all the strength at our disposal so that the message goes home to government, to the media, and to all members of all communities. Because this hate campaign is not just a one-way thing. At the moment, it is looking one way, but it goes on the whole way. Now, I'll give you 2 or 3 very simple words which I used. Every one of us has a bad, short word of grudgeration, making another community look small. Whether it be a Hindu for a Muslim, a Muslim for a Hindu, a Parsi for a Hindu, or a Hindu for a Parsi. I mean, I'll only give you my example because nobody bothers too much about the Parsis. And they are called Kawas, Kagra.
And that is how they are called. They laugh it off. People used to laugh off these things, but now it's no longer a laughing matter. So I would like to suggest that today a message should go out to the entire country, possibly even in writing, but definitely to the media will be coming to see us shortly, that the biggest success of our meeting today, to get it across, that time has come, but this must stop. And it must stop in the interest not of minorities, but of the country as well. Thank you. मेरा एक सजेशन है कि नेक्स्ट ईयर 2004 ईयर ऑफ माइनॉरिटी डिक्लेयर कराया जाए, जिसमें माइनॉरिटीज़ के जो प्रॉब्लम्स हैं उनका हल तलाश किया जाए, सेमिनार्स वगैरह कंडक्ट किए जाए तमाम स्टेट में। ये आपकी तरफ से हो, सेंट्रल माइनॉरिटीज़ कमीशन की तरफ से। अगर कुछ ऐसा हो गया तो ये भी मेरे ख्याल से बेहतर होगा। ईयर ऑफ माइनॉरिटीज नेशनल कमीशन की तरफ से कि हमारे प्रॉब्लम्स हैं, हर जगह हम सेमिनार्स करेंगे, बातचीत करेंगे, एजुकेशन के बारे में बात करेंगे, और जो हमारे मसाइल स्टेट गवर्नमेंट में जाते हैं उसका जवाब ही नहीं होता। अगर कुछ लिखे भी तो इट इज़ अंडर द कंसिडरेशन बोलते हैं, फिर उसे कोल्ड स्टोरेज में रख देते हैं, और उसमें डायलॉग्स करना चाहिए। ये सब बातें शायद आ जाएगी। But when you declare a year, find the money for it. Let us adopt this resolution and ask the state minorities commissions to organize seminars and other things. No, for that they will use The special money. state government has to bear that cost, and in some way, central government and central minority commission should also. This November declare Yes. So far, Mr. Aziz has given a proposal. Well, his proposal is very good, but if you observe a minorities day in India, I think it will give a wrong signal. I think we should not say that all the, you see, the thing is this, even today, more than 85% of Indians, the Hindus, are not anti-Muslims. This is my feeling. There are only 10 to 15% of Hindus who are making all this propaganda. The majority of the Hindus are pro-Muslims. If I don't, they are not anti-Muslims at least. Had they been anti-Muslim, the Muslim would not have survived in India. This is my feeling. And Mr. Chairman, I was the first to point out to you about a particular leader's speech when he said that 3 नहीं देंगे तो 30,000 देना पड़ेगा, 3 मस्जिद नहीं देंगे तो 30,000 देना पड़ेगा. This type of thing, you see, West Bengal is still, I am very proud to say, free from communal violence. In India, undoubtedly, West Bengal is one of the states where the minorities are fully safe. There can be no two opinions upon that, and this Mr. Chairman himself is a witness to that. But today, we find that slowly this venom is penetrating in the young mind. And this must be stopped. Bengal is not today what it was 10 years or 20 years ago. The scenario is changing. So these things must be checked, and it is for the elders to decide here how to check it. As it is stating that minorities commission as a Muslim commission, तो उसे और उसमें हो जाएगा. As Mr. Aziz has said, a minorities day. Minorities day is not a Muslim day. There are 5 minorities recognized by the Act, and but still it will be taken as a Muslim day and not a minorities day. But so it will give a wrong signal to the entire country. But please remember that 18th of December is a United Nations Day for the minorities. So don't use it as an Indian Minorities Day. Use it as a national or international day. International Minorities Day. 18th December is the International Minorities Day. So use it as such. But Minorities Right Day. So it should not be minorities. And the other point that was made this morning is very, very important to get across, that minorities does not mean Muslims. And that all minorities in the Hindu Muslim. So ये proposal का
ये एंटी हेट कैंपेन एक्ट के बारे में क्या कहते हैं? ये आपकी क्या राय है चेयरमैन साहब? मैं जानना चाहता हूं। देखो जी, जब ये हमारी मीटिंग हुई एक मुस्लिम कम्युनिटी पे, तो वहाँ ये यूनानिमस प्रपोजल यही थी कि इंडिया में स्पेशल कोई ऐसा लाइक अमेरिका हो और ये ताकि कुछ डर की भावना पैदा हो। आपका आल दीन में ये जो भी होते हैं गवर्नमेंट के, थोड़ा सा भय करने के लिए होते हैं। वैसे जैसे आप जज साहब ने बोला, लॉ की तो कोई कमी नहीं है कि अगर हम प्रपोज गवर्नमेंट को करें इन एनी फॉर्म, अपना ये स्टेट एक्ट है, ये तो हम स्टेट गवर्नमेंट भी गवर्नमेंट दोनों को कहना पड़ेगा। अपना ये तो पूरे सीधे स्टेट सब्जेक्ट। मेरा ख्याल है साहब हमें प्रपोज करना चाहिए, इस वजह से प्रपोज करना चाहिए कि फोटो के को इनायत करते वक्त बहुत से लोगों ने कहा कि हमें स्पेशल लॉ की जरूरत नहीं, और जो एग्जिस्टिंग लॉ इज इनफ टू स्टॉप दिस More powerful than any hate law. So, and even then they had a photo. So this sends a message. मेरा ख्याल है इसमें सर आईपीसी में ऑलरेडी प्रोविजन है 153 का में, तो उसमें कोई जरूरत नहीं है अलग से। उसके तहत हमारी केस रजिस्टर्ड की हमारी स्टेट एक्शन लिए राजस्थान में। बाल ठाकरे ने कहा कि हमको सुसाइड नहीं वहाँ भी 153 का में केस रजिस्टर्ड हुए महाराष्ट्र में, वो अलग बात है। एविडेंस नहीं पेश हुआ तो बरी हो गए, वो अलग बात है। पब्लिक मीटिंग में था 25,000-50,000 लोगों के बीच में उन्होंने कहा कि we should prepare suicide squads, we should destroy Muslims by thousands and lakhs. इतना बोलने की बात वो नहीं चलेगा। we wrote a letter, हमने रेजोल्यूशन पास किया गवर्नमेंट से, ये क्या हो रहा है तो गाड़ी जाकर इतिहास में वक्त है, आप जानते हैं आई विल नॉट टेल यू ऑल दैट, ट्रिब्यूनल सब आता है क्या एक्चुअली। और अगर किसी ने एक मामूली आदमी को फोटो का इस्तेमाल तो इतना गलत हो रहा है, अगर ये इसमें मैं इससे तो रेट बढ़ेगा। मैं दो बात करूँगा। एक दूसरा पहलू भी एक है, बार बार लोग ये सोचते हैं कि ये माइनॉरिटी कमीशन क्या कर रहा है, क्या ला रहा है। मैं समझता हूँ रेजोल्यूशन तो होना चाहिए, ये हेट वाला नहीं होना चाहिए, पर्पस के लिए होना चाहिए। जरूरी आज हेट वाला ही एक मैसेज माइनॉरिटी ओनली मैसेज जाए कि भाई कंट्रोल है साहब। देखिए उसको कैसे रोका जाएगा, कोई भी आगे कोई तकरीर करे, कुछ भी वक्त चला जाए तो है ऑलरेडी प्रोविजन है आईपीसी कहाँ, तो आईपीसी में एक्शन कर देते हैं। एक्शन लिए नहीं किया तो हमारे महाराष्ट्र में एक भी केस वी हैव रिटन कंटिन्यूअसली टू दैट, जैसे कि यहाँ ये स्पीच भी आ गई, वहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया। एटलीस्ट देयर बी सम फियर इन द माइंड ऑफ पीपल कि ये ऐसा एक बना है और उसके लिए एविडेंस नहीं पहुंचा प्रॉपर, बल्कि वहाँ तो गाड़ियों को तो रेड लाइट काट दी थी आईपीसी में प्रोविजन ऑलरेडी है, वहाँ सेपरेट उसी प्रोविजन के लिए कोटा की क्यों जरूरत पड़ गई, फिर कोटा पे क्यों जरूरत पड़ गई। कोटा की हालत की मैंने सर्कुलेट किया है, वहाँ ये हालत है कि अगर कोई टेररिस्ट है उसके साथ तो किसी बच्चे ने कोई मुझे सुन लीजिए। देखिए एक नाचन था, उसके साथ में जिन बच्चों ने क्रिकेट खेला था जिस जमाने में, जिन बच्चों ने उसके साथ पिकनिक की थी, उनको सब बंद कर दिया। बस पुलिस ने अगर उसको पकड़ लिया तो खत्म हो गया। अभी ऑपरेशन जो उन्होंने मंगाया था शॉर्ट कमिंग रिपोर्ट का, उसके बारे में हमने तैयार किया, उनको हमारा रेजोल्यूशन पास किए जो आपको सर्कुलेट करते हैं। वहाँ तो इतना मिसयूज हो रहा है कोटा का, तो जब नहीं मैं ये समझता हूँ जैसे कि खंडेलवाला साहब आप मेरे बुजुर्ग हैं, हासिल ये है कि कोटा का इस्तेमाल किस तरह हो रहा है आप जानते हैं। यानी कि मामला सुप्रीम कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट सुपरविजन कर रही है गुजरात हाई कोर्ट के ऊपर। आपने एमिकस क्यूरे मुकर्रर किया है, आप हेट एक्ट बनाएंगे, इसका भी किस तरह इस्तेमाल होगा आप समझ सकते हैं। तो एक और कॉम्प्लिकेशन बढ़ा दिया जाए और एक और प्रॉब्लम क्रिएट कर दिया जाए, तो ये तो मेरे ख्याल से मुनासिब नहीं। और शहाबुद्दीन साहब तो मुझे भी बहुत खत लिखते हैं, उनसे मेरा भी बहुत अच्छा ताल्लुक है, वो सोचते भी हैं, लेकिन ये कहाँ तक मुमकिन है इसे इम्प्लीमेंट करना, ये आपको सोचने की चीज है। कानून है, इतने प्रोविजंस हैं, आप उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते हैं, आप कहते हैं कि कैसे रखेंगे नया कानून। Who will implement? It is called the executive to implement. If the executive will not implement, then who will implement? We cannot implement. The minority commission, national commission cannot implement.
We are not the implementing authority, we are not the implementing authority, it is the executive who will implement, and executive are not implementing. So this is quota is very strictly implemented in Maharashtra और दूसरे एक्सपोर्ट नहीं है तो हम क्या करें? How can we impress upon them कि नहीं ये गलत है इसको आप ये एक्ट कर लीजिए? हर स्टेट में एक्ट है अलग से इसी टाइप I was speaking about the minorities case. But why I put that suggestion is, for the last statement, we reviewed all the districts in our state. We find that there are so many schemes devised by the government of India and states. They are not being implemented properly. 15-point Prime Minister program. I am happy to say about 10-15% to 12% is implemented in my state. Whereas Bombay delegation and some, they don't know about that program and schemes. Percentage of share for minorities, it has not been fixed. For education purpose, it is 10,500 crores, whereas minorities are getting only 1.5%. That's what the figures which I have collected says. In my report, I have clearly stated that I will submit that report to the Chief Minister, and I will submit here also. And then, sir, effective implementation of this scheme is not there. We have seen schemes are there at the central state level, but when we reviewed at district level, implementation officers, they have not done it properly. That requires supervision. They are not even aware part of the government schemes. So, why I suggested this is, if our commissions in all these states take up intensive tours of districts with the collectors and deputy commissioners or the district level officers, it is possible that it can be reviewed and improved. That's all what we are doing in Karnataka. So I suggest this type of seminars should be held and proper at all levels, and the schemes will be implemented if these seminars are held and public awareness regarding debts of selling to formulate some new provisions in the existing law or some new act. Whereas Karnataka is concerned, there are here and there some communal clashes which subside within few hours or within one day, within a day or two. But they don't go long as the case in Gujarat and other states, Delhi and other states. So what I feel, sir, we must take up this matter very seriously in the entire country, and proper legislation should be brought before the Parliament to curtail the smells of this communalism. Not to rule out this suggestion, for the time being, let us defer it. I will ask Sayyid Shahabuddin to please give me a clearer picture of what he wanted. I will request him to give me some excerpts or a copy of the American anti-hate law. यानी अमेरिका में तो यहाँ तक है, if you look at some, पहले उन्हें blacks कहा जाता था, उनका हमें खबरदार black का, उन्हें colored कहा जाने, उनका खबरदार जो हमें colored कहा, उन्हें negro कहा जाने, उनका खबरदार जो हमें negro कहा, अब African American कहा जाता है, अब वो उस पर भी एतराज़ कर रहे हैं, हमें African क्यों कहा जा रहा है, हम तो American. I mean, this is going on. If you look at someone like this, he can go and report that this man looked at me with contempt and hatred, and the fellow against whom he complains can be. I support your suggestion.
I also say Fine, fine. ठीक है Fine. We are not rejecting it, we are हाँ, for the ठीक है, time being But we it are. requires to be made public. certificate from the authorities, whosoever they are. Because every day one is to go to first point, they say show whether you are a minority person or not. So this is a major problem being faced all over India. In many states, there are no minority commissions. So those states come to us directly. And even in Delhi, the capital, a lot of people are deprived of. So this problem, how to solve it? Legally, in every Tehsil subdivision magistrate is to issue a certificate. Even the acute caste, Dalits and backward, they also get certificate. But minorities are not being given this facility in many districts, many. So how to? So briefly we should decide what could be the agency and how we can help. So far, I think that the respective state government should be moved to allow it to issue certificates. That is one proposal, that every state minority commission or their subsequent, whichever you have fixed, they should be authorized. like SC ST का जो certificate लगता है एक तो ये हुआ कि every state minority commission के ऑफिस से if somebody and you are satisfied. For that, you will have to amend. Item going now. No state is going to amend law only for our purpose. You know, it is not an. It means then totally it goes in a well. इसलिए कोई act को amend करेगा ही नहीं. Under existing act, we want this facility to be given to us. Not no need of amendment of act. Sir, if you go in for amendment, Never. what you should do is you must push your boundary. We only recommend to a state government, it has been decided that in addition to the facilities available in the state, where the NCM to provide more handy and the state minority commissions are also authorized by the state government that they also issue certificates. They will honor the certificate. They should honor the certificate issued by the state minority. सर, इसमें हमने अपने स्टेट में ये किया कि माइनॉरिटी कमीशन में एक रेजोल्यूशन पास किया और गवर्नमेंट को भेज दिया और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस को हमने सर्टिफिकेट देना इशू कर दिया। सर्टिफिकेट हम इशू करते हैं कमीशन से, लेकिन अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की कई स्कीम्स ऐसी आ गई हैं जिसमें माइनॉरिटीज को ही वो स्कीम्स का फायदा मिलना है, तो उसमें माइनॉरिटीज होने का सर्टिफिकेट इंडिविजुअल भी मांगते हैं वो लोग। तो उसके लिए जरूरी है कि स्टेट गवर्नमेंट कर सकती है इसको, तो अपने कमीशन से हम स्टेट गवर्नमेंट को रिकमेंड करो, आप नेशनल कमीशन से नेशनल करो उसको। नहीं अथराइज इसको करेंगे आप? नहीं अथराइज नहीं, हम ये कि वो गाइडलाइन तैयार करें SC ST की लाइन पर जाएगा। आपको डिसीजन ऐसा दीजिए कि ये हम आप समझे नहीं, बड़ा सिंपल कर रहे हैं आप। भाई जो स्टेट गवर्नमेंट का लॉ है वो तो डिस्ट्रिक्ट है ही। बिकॉज ऑफ दैट पीपल आर फीलिंग डिफिकल्टी। हम तो चाहते हैं सम हेल्प टू देम कि अगर स्टेट मिनॉरिटी कमीशन जहाँ है, अगर दे अप्रोच देम एंड ये सर्टिफाई यू कि आई एम सिक, यू इशू में कि ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्मेशन आई आर रोशन सिंह इज सिक, तो वो सर्टिफिकेट आपका कोई एम्प्लॉई सेक्रेटरी समथिंग इशू टू हिम। और अगर आपका जैसे मध्य प्रदेश यू हैव डिस्ट्रिक्ट लेवल ऑफिस वो भी करते, दिस शुड बी आल्सो ए फैसिलिटी। We are going to recommend this to each government कि minority commissions are also authorized. सर मुझे कुछ कहना है। वो तो है employment. तो इसलिए वहाँ क्या होता है, क्लास थी उसको रिजेक्ट कर देता थे। तो हमने ऐसा किया कि वहाँ से जो सीनियर ऑफिसर है, they actually must go to him and he must say why that a service cannot be issued to him. और अगर इशू करना है तो within 2 months he should issue that. और फिर हमको रिपोर्ट करें, लेकिन वहाँ पर भी फिर भी तकलीफ होगी। तो what we have decided, commission, they should approach commission and commission should inform collector about it and collector should help us in getting this issue. क्योंकि हमको कैसे मालूम होगा that man deserves that certificate or not? So I go wrong, अगर समझो representation करके ले लेगा तो बोर्ड हमको responsible करेगी। कमीशन नहीं करेगा। कमीशन को collector की मदद मिलनी चाहिए या किसी और डॉक्टर ऑप्शन मिलनी चाहिए, then only the job will be done. The certificate. Can we say something, sir? I think it's very easy to take a decision from here and walk out. Who is going to do it? State government. There's a thing about that. And then you will have to pay here for that. Sir, we request the state to implement this. अपने आप इम्प्लीमेंट कर दिया है। स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है।
हमारे एक पॉइंट में भी आ गया है वो स्टेट गवर्नमेंट इशू कर रही है उसी लाइन। मेरे ख्याल में आई हैव फेल्ड टू कन्विंस कि प्रॉब्लम आप समझ नहीं रहे। प्रॉब्लम ये है कि एवरी पर्सन whosoever needs it is goes to some person to get it. लेकिन दलित को भी मिलता है, बैकवर्ड को मिलता है, मिनॉरिटी वाले को नहीं मिलता। वो समझेंगे ये नजरिया क्या है। वोटर लिस्ट में there is no word कोई एंट्री नहीं होती, कोई एंट्री होती है, यू आर एस करेंगे। ये तो एक नई प्रॉब्लम है कि हाउ यू जस्टिफाई। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है जिसके लिए वी शुड, आप जैसे सरकार तो कर ही रही है, इट्स ड्यूटी, लेकिन नहीं हो रहा। कंप्लेंट इज एंड दैट इज आवर प्रपोजल हाउ टू ईज इट, हाउ टू हेल्प द मिनॉरिटी। एनसीएम को करना पड़ेगा। देखिए बताऊँ आपको, मैं बताऊँ मेरी रिलेशन में एक लड़की ने एप्लीकेशन दिया इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में डेंटल कोर्स में आर्थोपेडिक में दाखिल कराए। वहाँ 2 सीटें जो है माइनॉरिटीज के लिए, वो अब वो कह रहे हैं कि साहब आप लिखवा के लाइए कि आप मुस्लिम हैं। लिखवा के लाइए, कोई लिखने को तैयार नहीं कि भाई हाँ अब ये सर्टिफिकेट जाता है तो उस व्यक्ति को मुस्लिम को कहते लॉ बॉय लॉ ये लॉ नहीं, मुस्लिम का सर्टिफिकेट लाओ। हाँ कोई सर्टिफिकेट लाओ, सर्टिफिकेट लाइए कि आप मुस्लिम हैं। मैं यही कह रहा था। कई राज्यों में आपने बिल्कुल सही कहा है। आपने बिल्कुल सही कहा है कि ये डिफिकल्टीज वेस्ट बंगाल में बहुत ज्यादा फील हो रही है और किसी डिस्ट्रिक्ट में साल में 1 या साल में 2 ओबीसी सर्टिफिकेट मिलता था मुसलमानों को और ये कहते थे कि तुम यहाँ पर तो 50 साल 100 साल से बसे हुए हो, बिहार से आए हो, तो अब तुम वहाँ अपने नेटिव विलेज से सर्टिफिकेट लाओ कि तुम आपके वाकई ओबीसी हो या आपके तुम अंसारी हो। तो अब वो बेचारा 100 साल से कोई जब पहचानते ही नहीं, उसके ना बाप दादा को पहचानता है, अब वो कहाँ से लाए, ये डिफिकल्टी हो रही थी। तो इस पर हमने चीफ मिनिस्टर से राब्ता कायम किया और उन्होंने एश्योर किया है, मगर उस पर भी उतनी ज्यादा कामयाबी नहीं हो रही। अब बात असल है कि अगर हम माइनॉरिटी कमीशन की हैसियत से हम मैं चेयरमैन साहब को कहूँगा, जज साहब आप बड़ा सिंपल, मैं कह रहा हूँ हमारा सर्टिफिकेट जब वैलिड स्टैम्प किसी के पास होगा नहीं, गो टू अथॉरिटी, we will write to the government. After we cannot become authority of it. We are recommending to every state government कि minority commission को भी ये स्टेट गवर्नमेंट का आर्डर होगा कि अगर they is carrying a certificate उसको वैलिड माने। That I agree with you 100%. I agree with you 100%. यही तो प्रपोजल है, मैंने कोई कहा मैं तो प्रपोजल ही यही हमारे। एक मिनट, ये हम लोग को भी बोलने दीजिए क्योंकि हमारे राज्य में बहुत सा दिक्कतें कई आपके जो आपने रखा है, ये माइनॉरिटीज कमीशन को बेहतर है और ये इशू माइनॉरिटीज कमीशन के लिए रखा है बेहतर, इसलिए कि कमीशन में सारे आपके समुदाय के लोग भी रहते हैं और वो जानेंगे कि हाँ भाई मुसलमान हैं कि क्रिश्चियन हैं कि सिख हैं या बुद्धिस्ट हैं। ये आपने जो प्रस्ताव रखा है और इस पर अमली जामा आपके ओर से भी सूबों में राज्यों में करना पड़ेगा, तब जाकर ये इम्प्लीमेंट। नहीं स्टेट गवर्नमेंट है तो उनकी तभी माना जाएगा हमारा। ये यहाँ भी इतना है जाति प्रमाण पत्र के लेकर दिक्कत। अभी हमने एक सह हो या आपका डीसी के यहाँ हो तो उनको अति पिछड़ी जाति का बैकवर्ड नहीं, अति बैकवर्ड, वो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिलते थे। बहुत मुश्किल से हमने अभी आपका लागू कराया, जो बिहार में ये लागू नहीं था। बिहार में और जातियां थी, जब झारखंड अलग हुआ तो ये दिक्कत थी और खतियान में काफी, झारखंड में अध्यक्ष माननीय अध्यक्ष महोदय झारखंड में ये था। और जो आपने प्रस्ताव रखा है, जो आपने रेजुलेशन रखा है, उस रेजुलेशन के हम पक्ष में है, मैं आपका समर्थन करता हूँ इसमें कोई, और इसमें मैं माननीय चेयरपर्सन जितने भी हैं उनसे भी मैं नम्र निवेदन बहुत अदब के साथ गुजारिश करूँगा कि ये अच्छा आपका चेयरमैन साहब ने रखे हैं और इस पर डिस्कस भी काफी हुई है और कोई डिस्कस की जरूरत नहीं, सब समर्थन करें और हमारे लाभ का मामला। नॉट गिविंग ए रॉन्ग सर्टिफिकेट आफ्टर आपके हम 9 मेंबर हैं, 10 मेंबर हैं, अगर कोई जानते हो तभी दोगे। ठीक बात है, हम लोग ने अब आप विधायक और एमपी जैसा नहीं किया, नहीं कमीशन को भी कीजिए उसमें, ये इंस्टीट्यूशन तक रखें तो
देना शुरू कर दिए तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा। सुनिए, मानिए आप इसे अब विधायक एमपी बनेंगे तो ये होगा आपके साथ भी, लेकिन आप समझे कि चेयरमैन मैं कमीशन का हूँ, मेंबर मैं कमीशन का हूँ, भाई चेयरमैन मैं हूँ। जनता के जांच पर नहीं, हमारे यहाँ तो आराम से मिलेगा भी, और देर भी नहीं होगा उनको, जितना आपका डीसी के यहाँ, एसडीओ के यहाँ, बीडीओ या सीओ के यहाँ दौड़ना पड़ता है, इसलिए इसको रहने दे। सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पे है, उनके पास इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं होते हैं हाँ। पूरा जानकारी लेने के लिए, ये सर्टिफिकेट देने के लिए, मतलब स्टेट कैबिनेट में बैठने में स्टेट कैबिनेट में जो लोग होते हैं उनको प्रैक्टिकली उसका तजुर्बा सर्टिफिकेट किस तरह इशू किए जाते हैं और क्या प्रोसीजर है SC एक्ट और OBC का। ये चेयरमैन साहब ने जो ये सजेशन दिया है, सजेशन तो बहुत ही अच्छा है और उनके दिमाग में जो बात है वो भी बहुत अच्छी है। अब सिर्फ है कि हाउ टू पुट इट इनटू प्रैक्टिस, क्योंकि हर कमीशन के पास स्टाफ होना चाहिए क्योंकि वो इन्वेस्टिगेशन या डिस्ट्रिक्ट से, वर्धमान डिस्ट्रिक्ट से कलकत्ते में आ रहे हैं, तो वी मस्ट हैव द स्टाफ आल्सो सो दैट दे कैन गो एंड इन्वेस्टिगेट। अगर ये चीज